Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 14 October 2021 and I am teaching you chapter number 12. Name of the chapter Air, Water and Weather. Okay, so let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we have completed the book exercises of the chapter. After that we have completed the short question answer of the chapter, and then next question is give detailed answer to the following question. So first two question we have already completed in our classwork copy. So only one more question is left, that is question number 3. So student, please take out your classwork copy and note down the third answer in your classwork copy. So question is, write the difference between evaporation and condensation. Question number F. Question F. Give detailed answer. First two question we have already completed. So this is question number 3. What are the difference between evaporation and condensation? Write the difference between evaporation and condensation. So student, evaporation is the process in which water change into vapor form. As we know that water exists in three forms: solid, liquid and gas. Okay, as we know that the water exists in three forms, that is the solid, liquid and gas form. Solid form is known as ice, liquid form is the water, and gas form is known as water vapor. So due to the heat of the sun, water change into the form of a vapor, and this happens due to the heating of the sunlight. So this process is known as evaporation. Okay, and what is condensation? So condensation is the process in a water vapor cools. ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, वाटर वेपर कूल हो रहा है, एंड ऑन कूलिंग इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर. ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. इवापोरेशन कैसे हो रहा है? ऑन हीटिंग. और कंडेंसेशन में क्या है बेटा? ऑन कूलिंग. इज इट क्लियर? सो नोट डाउन द answer. The process by which
process by which water change into water, the process by which water change into water vapor on heating is called evaporation. It's called evaporation. For example, drawing of flows. ठीक है, वेट फ्लोस होते हैं आप, और फिर उसके बाद से वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि वाटर जो होता है फ्लोस में से क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है. सो एग्जांपल इज ड्राइंग ऑफ फ्लोस. नाउ राइट कंडेंसेशन. Right, condensation. The process by which water vapor change into water vapor change into water on cooling is called condensation. For example, tiny droplets on the surface of each bottle.
Okay, so we have completed the chapter. Now student, mark, take out your book, open page number 72. Tick sea bridge and land bridge. These both diagrams you have to draw in your classwork copy, sea bridge and land bridge. Now all of you open page number 74. Page number 74, water cycle. So tick this diagram, you have to draw this diagram in your classwork or copy. Is it clear? You have to draw this diagram in your classwork copy. You can take a screenshot also. So after completing this chapter, student, we will start with the new chapter, that is chapter number 14. Start with the new chapter, that is chapter number 14. Our community. ठीक है. So name of your new chapter is our community. So what are the learning objective of this chapter is that what a community is. So what do you understand community? That you will understand different community services and the various community agencies. Okay, so these are the learning objectives which we will cover in this chapter. First of all, student, what is a community? A group of people living together in a particular area. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं. जैसे आपने क्लास 3 में भी पढ़ा होगा, ओके, कि टू फ्रेंड्स दे लिव टुगेदर, ठीक है, इन अ कम्युनिटी एंड हेल्प ईच अदर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आप कहीं रहते हो, इफ़ यू आर लिविंग इन सम एरिया एंड आपके अगल बगल भी बहुत से घर होंगे, ठीक है, जहाँ आप रहते होगे आपके अगल बगल भी और भी घर होंगे, ठीक है. तो वो जो लोग उन हाउसेस में जो लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, उनकी आपसे क्या रिलेशन है? सो दे आर देयर नेबर्स. वो सब क्या आपके? दे आर देयर नेबर्स. ठीक है, वो सब के सब आपके क्या है? नेबर्स हैं. और ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आप लोग को बताया था नेबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर नेबरहुड प्लेसेस एंड व्हाट आर द नेबरहुड सर्विसेज. सो नेबर, दिस इज नेबरहुड. इफ यू स्टेप वन, अगर आप अपने घर से बाहर निकल जाते हो तो जो भी आपकी सराउंडिंग्स है वो सब आपकी क्या हो गई? नेबरहुड प्लेसेस हो गई. ठीक है. और नेबरहुड सर्विसेज which make your life easier and comfortable. What are that?
तो आप जहाँ भी रहते हो, हम जहाँ भी रहते हैं, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हमें मिल सकें। जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था क्लास 3 में भी, स्कूल है, स्कूल, पार्क, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, स्कूल है, पार्क है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, मार्केट, हॉस्पिटल, बैंक। अच्छा, so these are the neighborhood services which make our life more easier and comfortable। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 3 में भी डिस्कस किए थे कि these are the neighborhood services which make our life more easier and comfortable। ओके, सो स्कूल है, पार्क है, यू, सो पुलिस स्टेशन, पुलिस विल मेंटेन द लॉ। ओके, इन बैंक you can kept your precious things, or even you kept your money also saved there. Your money is saved in the bank. Hospital, if anyone is sick, then what we do, we go to the hospital. Market is for day to day, in our day to day life, some of the things which we buy daily, like milk and fresh vegetable and fruits, bread, तो हमें डेली जाना पड़ता है मार्केट। ओके, सो वी नीड अ मार्केट आल्सो इन आवर नेबरहुड प्लेसेस। वी रिक्वायर्ड स्कूल आल्सो, ठीक है, फॉर द स्मॉल किड्स। पार्क इज आल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज पार्क इज द प्लेस इन विच पर्सन ऑफ ऑल एज ग्रुप कैन गो इन द पार्क। ओके, so these are the neighborhood services which make our life more and more comfortable। So these are the things which we have already discussed in the previous class। Now you want to note down, then you can note down the definition of a community। What does community mean? A group of people living together। A group of people living together in a particular area is called a community। ठीक है, so what is the community? A group of people living together in a particular area is called a community। Okay, so they also help each other also। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके नेबर्स, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आपके नेबर्स भी आपकी हेल्प करते हैं। इफ दे हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू आल्सो हेल्प देम। इज इट क्लियर? ओके, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट। थैंक यू।